চলিত বৰ্ষৰ 14 জানুৱাৰীৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত আৰম্ভ হৈছে মহাকুম্ভ মেলা। আগন্তুক এপ্ৰিল মাহলৈ চলিব এই মেলা। কুম্ভ মেলা হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ অন্যতম মুখ্য উৎসৱ। 12 বছৰৰ চক্ৰত পালন কৰা হয় এই কুম্ভ মেলা। পূৰ্বতে কৰা পাপ খণ্ডনৰ বাবে এই উৎসৱ পালন কৰে হিন্দুসকলে। এই মেলাত উপস্থিত হৈ সৰ্ববৃহৎ সমাৱেশ গঢ়ি তোলে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে। যিহেতু কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত বিশ্বৰ সকলো কাৰ্যকলাপ ব্যাহত হৈ আছে, সেয়েহে এইবেলি সকলোৰে বাবে মহাকুম্ভত যোগদান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এনে পৰিস্থিতিত শান্তিকুঞ্জৰ গায়ত্ৰী পৰিয়ালে কুম্ভত আৰম্ভ কৰিছে আপকে দুৱাৰ পহুঁচা হৰিদ্বাৰ শীৰ্ষক এক অভিযান। ये वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है। वर्ष सही पूछा जाए तो जन जागरण का वर्ष है। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों के अंदर की जो अभिप्सा है वो एक ही है कि परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन, परम वंदनीय माता जी का चिंतन, माँ गायत्री का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा प्रत्येक के घर तक पहुँचे। ये पूरे देश भर के लगभग 50,000 घरों तक हम लोग अभी फर्स्ट फेज में पहुँच रहे हैं और 50,000 घरों तक गंगा जली, एक गंगा मैया का चित्र भी है, एक पुस्तक है जिसमें कुंभ का महात्म्य है और एक ऐसा पत्रक संकल्प है जिसमें कि आप अपने परिवार को सुसंस्कारी देव परिवार बनाएं। इतिहासत एतो प्रथमबाৰৰ বাবে হ'ব য'ত মাতৃ গংগাই স্বয়ং সনাতন ধৰ্মৰ ভক্তসকলৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হ'ব। শান্তিকুঞ্জৰ ডক্টৰ গোপাল কৃষ্ণই গংগাজল, বেদমাতাৰ গায়ত্ৰীৰ ছবি আৰু যোগা সাহিত্য 1 মিলিয়নতকৈও অধিক পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। मानवता कोविड के संकट से जूझ रही है और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए न जाने कितने ऐसे श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार आना तो चाहते हैं पर विवशता के कारण वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। उसमें से जो समर्थ हैं वो किसी न किसी रूप में फिर भी आने की व्यवस्था कर सकते हैं, बट गांव में रहने वाले लोगों का क्या? ये गाँव का देश हमारा भारत और वहाँ के सुदूर गाँव में निवास करने वाले लोगों तक किस प्रकार से हम माँ गंगा का जल लेकर के जाएं? कुंभ की वास्तविक प्रेरणा क्या है? कुंभ के पीछे छिपी धार्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में हम युवाओं को लगते এইবেলি গায়ত্ৰী তীৰ্থ শান্তিকুঞ্জ স্থাপনৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে 50টা বছৰ। গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ লগতে শুভ মহাকুম্ভৰ সৈতে লক্ষাধিক লোকে যোগদান কৰিব বিচাৰে যদিও এইবাৰ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে এয়া সম্ভৱপৰ নহয়। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপকে দুৱাৰ পহুঁচা হৰিদ্বাৰ শীৰ্ষক অভিযানে কুম্ভত থকা অনুভূতি প্ৰদান কৰিব ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ETV ভাৰত অসম। এনে ধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ETV ভাৰত।